Welcome to another episode of Education India. They go to a new house, new environment, they don't have money. Like सब ठीक रहता है. You need money for your health also. आपका money grow करेगा. We are educated, we have knowledge, but जहाँ पर बच्चों को guidance दी जाए, like they guide. And girls के लिए तो especially बहुत ज़रूरी है. In coming time महंगाई भी बढ़ जाएगी. हिम्मत, हौसला मिलता है कि I've seen many women जो educated हैं लेकिन उनको idea नहीं है. Yes, it has been impacting them. In today's talk show, our guest is a financial expert who has educated innumerable women in financial skills and knowledge. Meet Ms. Alka Duria. Welcome to the show, Alka. Alka, how did you exactly start this financial education or enlightening women about financial skills and investments and all that? मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आई लर्न अ लॉट कि लाइक women should invest very early. I've been to this colleges also where engineering लक्ष्मी ऐसा हुआ लाइक व्हेन वी आर स्मॉल हमारे पेरेंट्स हमें ये तो बताते हैं कि लाइक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स. आप 10th करिए, आप 12th करिए, बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलेज एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर women, for girls, but they never educate their girl child especially on financial investments, and that is very important, that is very crucial in life for future. Women like when they are married off, they have nothing with them. They have really nothing with them. They go to a new house, new environment, new people, and they adjust themselves over there. But with no money, then they like feel. उनको महसूस होता है कि we have everything, we are educated, we have knowledge, but we don't have the financial independence. For even for little things, even for big things, even for large planning, even for small things, like they're dependent upon their spouses or dependent upon the family members. So this kind of experience, it made me think that what I'm doing with my life, मैंने अपने आप को इतना ऐसा क्यों बना लिया है, why I'm like this. And leave me, there are many women, other educated women, they have knowledge of everything. They are very capable women, but they have no knowledge of financial investments. So this kind of thing like encouraged me to step into this field, learn myself, and guide other women upon this. So you were just telling me that financial knowledge nahi hone se, women, it impacts a marriage. How does it impact a marriage and how does it impact a woman? Very good question, Lakshmi. Very good question. Women, जब उनकी मैरिज होती, गर्ल्स when they are married at the age, फर्स्ट ऑफ ऑल उन पे ये इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, पेरेंट्स ये इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि शी शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. So when she goes to a very new environment, she hardly knows anyone over there. She only knows her husband. But later on in life, na Lakshmi, you see, later on in life, you need money for everything. You need money for good house. You need money for good lifestyle. Need money for children. You need money for education of the children. You need money for your health also. And often women neglect their health. They give priority to like ठीक है बच्चों के लिए हो जाए, घर के लिए हो जाए, but they often neglect their health because of the money issue also, mostly because of the money issue also. Okay, इसका कर देते हैं, we'll think about ourselves later on. It really impacts if a woman in a household is like affected. So the whole household is affected, even the children are affected. And one thing is that तो पूरा burden husband पे आ जाता है finances का, and he has to provide for his elderly parents also, he has to provide for his immediate family also. अगर इसमें women को थोड़ी सी knowledge है investment को, she can help her husband, and she can help
in her husband in finances relating to like education of children. You know, later on in life, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो education is quite costly. For good education आपको अच्छा money निकालना पड़ता है. And husbands are like very grateful के like women is contributing for the children, for the household, for their parents. She's taking care of us. I've seen and I also felt also, Lakshmi, that if you have money, you have another kind of confidence level. Your self-esteem rises. You like even your children, they really appreciate you. They really respect you, and you contribute. Like it's a like सब ठीक रहता है, सब कुछ ठीक रहता है. तो it's very important कि financial investments लेडी को पता होने चाहिए, and she should know how to invest in mutual funds, in shares, in there's so many schemes in PPF, in national pension scheme, in आजकल वो गर्ल्स का है ना सुकन्या समृद्धि योजना. सो शी शुड नो ऑल्सो थिंग दैट वो ठीक है, हस्बैंड के बिना हेल्प के भी इट्स लाइक वेरी ट्रांसपेरेंट एंड इट्स वेरी इजी. यू गो टू एनी बैंक, यू यू कैन डू इट ऑनलाइन ऑल्सो, एंड यू कैन खुद ही इन्वेस्ट करो. मतलब यू डोंट नीड एनी वन एल्स हेल्प. आपके पास मनी है, आप खुद इन्वेस्ट करो. इन्वेस्ट इट फॉर योर फ्यूचर, इन्वेस्ट इट फॉर योर चिल्ड्रन फ्यूचर. सो इट्स लाइक काइंड ऑफ आप अपना 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 और आप बच्चों का और आप फैमिली का भविष्य सिक्योर कर रहे हो. डोमेस्ट लाइक अगर इट द क्वेश्चन इज लाइक आप फैमिली एटमॉस्फेयर से इफेक्ट होता है. आई हैव सीन मेनी वीमेन जो एजुकेटेड हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं है. यस, इट हैज बीन इम्पैक्टिंग देम बिकॉज जब टोटल बर्डन एक इंसान पे आ जाता है तो इससे तो मैं क्या उम्मीद करूं, मेरे को खुद ही सब करना है. आई हैव टू सी दिस ऑल्सो, आई हैव टू सी 10 people, I have to see on my own. तो वो रिलेशनशिप भी अफेक्ट होता है हस्बैंड वाइफ का, and the respect is gone, the understanding is gone, and many women I've seen कि वो silently suffer करती हैं because either if they have money they don't know how to invest it, and mostly they don't have money also because they are not working. So यहाँ पर I've seen कि she suffers physically as well as mentally. Nobody is going to say anything to you, but the thing is that आपको फील होने लगता है कि पीपल आर नॉट लाइक रिस्पेक्टिंग यू. आपको उस तरह से नहीं देख रहे हैं जिस तरह से आपकी उम्मीद रहती है, जिस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो हाउस होल्ड में, जिस तरह से आप फैमिली का केयर कर रहे हो. यू गिविंग देम फर्स्ट प्रायोरिटी एंड यू कीपिंग योरसेल्फ इन द लास्ट. लेकिन उस तरह से आपको रिटर्न्स मिल नहीं रहे हैं. तो एजुकेशन के साथ आई थिंक सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरतों के लिए, विमेन के लिए बहुत जरूरी है, एंड गर्ल्स के लिए तो स्पेशली बहुत जरूरी है. कमिंग टाइम्स महंगाई भी बढ़ जाएगी. यू नो, all the kind of securities are going to collapse in our modern world, in this globalized area, in this globalized world. All the kind of sab kuch is, nothing is forever, nothing is permanent. So you need women, a girl definitely needs financial independence, financial security, and she should know how to invest her money. कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ, कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करूँ, राइट टाइम पे इन्वेस्ट करूँ. आई थिंक सो पेरेंट्स को तो लड़कियों के लिए अर्ली से स्टार्ट कर देना चाहिए. आप एजुकेट कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड, लेकिन आप उसके लिए मनी भी अपार्ट रखो एंड टीच हर. उसको एक्सप्लेन करो कि हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर मनी. यू शुड नॉट डिपेंड अपॉन एनीवन, किसी पे नहीं. यू आर एजुकेटेड, यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर ओन इन्वेस्टमेंट. आप कहाँ इन्वेस्ट करो, गो फॉर छोटे से स्कीम से स्टार्ट करो. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो बिगर स्कीम्स को लेके, लाइक प्रॉपर्टीज एंड शेयर्स, सॉरी, you should invest, start from very small amount. Like FD is very, सबको पता है FD is very safe and secure. आप उसमें इन्वेस्ट करो. It's for 5 years also, it's for 6 years also, it's for 2 years also. आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपने इन्वेस्ट किया है एंड आपको कॉन्फिडेंस आ गया एंड यू गॉट द गुड रिटर्न्स ऑल्सो, नाउ इन्वेस्ट दैट मनी फर्दर किसी और स्कीम में. दे आर गुड फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स ऑल्सो, प्लानर्स ऑल्सो, जो आपको हेल्प करेंगे एंड गाइड करेंगे. उसमें यू डोंट नीड नॉलेज फ्रॉम एनीवन, एंड इफ यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, आप ऑनलाइन बैठ के भी आप सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो. एंड इट्स लाइक ओवरऑल आप डोमेस्टिक, आप मैरिज देख लो या फिर आप एनीथिंग,
औरत का या लड़की का किसी भी एस्पेक्ट में देख लो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से आपको जो एक कॉन्फिडेंस आता है एंड आपको एक हिम्मत हौसला मिलता है कि मैं बिना हेल्प के अपना लाइफ अपना कैरी कर सकती हूँ, अपने बच्चों का लाइफ, अपने इवन इफ माय हस्बैंड इज नॉट देयर, कुछ भी हो गया एंड मैं अकेले सब संभाल सकती हूँ. आई डोंट नीड टू डिपेंड अपॉन माई पेरेंट्स और अपॉन माई रिलेशंस, बिकॉज ये सब टेम्पररी होते हैं. हाउ फॉर हाउ लॉन्ग पेरेंट्स हैव ग्रोन ओल्ड, यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम. वो आपका कब तक 80s 90s में कितना आपका केयर करेंगे. So, Alka, how early do you think that ये financial education start कर देनी चाहिए बच्चों को? आई थिंक सो एज अर्ली एज पॉसिबल. जितना आप जल्दी कर सको, जितना बच्चों में एकदम नॉलेज आए, आप तभी से उन्हें गाइड करना शुरू कर दीजिए कि दिस इज द मनी एंड दिस इज योर बेबी, नाउ इन्वेस्ट इट. और आप किस तरह से इसे ग्रो करोगे. एंड लाइक आई हैव बीन टू द कॉलेजेस, मेनी कॉलेजेस, आई हैव बीन टू द फैशन इंस्टीट्यूट आल्सो. वहां पे मैंने देखा है कि गर्ल्स उनको कोर्स करा देते हैं, दे डू द कोर्स, बट जब वो अपना ओपन करना चाहती हैं, दे वांट टू ओपन देयर ओन बिजनेस, दे डोंट हैव मनी. एंड अगर उन्होंने बहुत पहले से इन्वेस्ट किया होता एंड दे न्यू अबाउट इट, तो दे कुड हैव यूटिलाइज दिस मनी इन देयर ओन बिजनेस. नाउ नाउ दे आर लाइक उनको पता ही नहीं मैं क्या करें. So I think so financial investment and this thing should start at a very early age. बच्चों को बहुत शुरू से इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. पेरेंट्स शुड गाइड देम एंड आई थिंक सो कुछ स्कूल में भी ऐसे कार्यक्रम रखना चाहिए. आई थिंक सो जहाँ पर बच्चों को गाइडेंस दी जाए, लाइक दे गाइड देम अबाउट एवरीथिंग, लेकिन इसके इसके ऊपर भी उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिलनी चाहिए. आई थिंक बचपन में हमें गुल्लक दिया जाता है. या गुल्लक देते हैं, लाइक हम उसको इन्वेस्ट उसको सेव करते हैं, लेकिन उसको इन्वेस्ट नहीं करते. हम सेव करते हैं एंड भी उसको यूज कर लेते हैं गुल्लक को, बट हम उसको फर्दर उसको ग्रो करें, उसको सेव करें और मल्टीप्लाई करें, वो चीज हम नहीं करते हैं. उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है. सो दिस काइंड ऑफ नॉलेज शुड बी देयर फ्रॉम स्कूल लेवल, आई थिंक. Can you tell us some methods where parents can educate their children at an early age? आई थिंक सो पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए सबसे पहले बैंक अकाउंट्स खोलने चाहिए, सेविंग अकाउंट्स. एंड दे शुड टेल देम कि यहाँ पर मनी आप डाल रहे हो, यहाँ पर आपको इतना ग्रो करेगा. एंड दे शुड टेल देम कि आपको रिकरिंग डिपॉजिट्स में सेव करना चाहिए. एंड बच्चों को थोड़ा सा जब दिल गेट रिटर्न्स फ्रॉम द रिकरिंग डिपॉजिट, बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, दिल लाइक इट के ग्रो कर गया मेरा अमाउंट. एंड उनको फिर आप एफडी के बारे में बताइए कि आप एफडी में डालिए फॉर पर्टिकुलर टेन्योर ऑफ टाइम, आपको इसमें इंटरेस्ट रेट इतना मिलेगा, आपका मनी ग्रो करेगा. देन दे नो दैट लाइक हमारा मनी बढ़ गया है एंड इतना था इतने से इतना हो गया है. एंड देयर वेरी स्कीम्स ऑल्सो. धीरे धीरे पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए अपने बच्चों को वेरियस स्कीम्स के बारे में. एंड लेटर ऑन दे कैन इन्वेस्ट इन बिगर स्कीम्स एंड इन बिगर ग्रोथ. लेटर ऑन दे कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड. आजकल वो गोल्ड, डिजिटल गोल्ड चल रहा है, बहुत चल रहा है. इट्स क्वाइट सेफ एंड आपका मनी भी ग्रो करता है एंड यू कैन कीप इट digitally for many years. What is digital gold? Can you tell us about that? It's like kind of you can open digitally. आजकल वो डिजिटल गोल्ड चल रहा है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स चल रहे हैं. तो बच्चों को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए इसके बारे में एंड वहाँ उनको इन्वेस्ट करना चाहिए इन दिस काइंड ऑफ स्कीम. आपको कुछ मिनिमम टेन्योर तक आप उसको सेव करके रखिए, आप उसको निकालिए नहीं. आप निकाल सकते हो लेकिन इट्स बेटर कि आप उसको ग्रो करने दीजिए एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे एंड दैट मनी आप इन्वेस्ट कर सकते हो फर्दर एजुकेशन में टू स्टार्टअप. जब तक बच्चा एजुकेट होके कॉलेज से, स्कूल से, कॉलेज से बाहर आएगा, बच्चे के पास अपना अमाउंट होगा, तो स्टार्टअप इज हिज और हर ओन बिजनेस और दे कैन यूज द मनी इन एनी वे दे लाइक.